It is written, write a note on the advantages of using the solar cooker. Why we should use the solar cooker? What are the advantages of the using the solar cooker? First of all, no expense of fuel is there. Food is easily digestible. The food that is cooked in the solar cooker is cooked in a proper way so that you can digest that food properly. Nutrients in the food remains as it is. That means there's no loss of nutrients in the food that is cooked by the solar cooker, and the quality of the food cooked is very good. So these are some points that um, are the advantages that is there for using the solar cooker. Now next is your read. The taste of different food is not same. We enjoy due to the difference in the taste and aroma of the food. Which different tastes have you experienced? Now there are different types of 6 different types of taste buds are there in our tongue also. Starting from the front, moving on to the back, up to the पूरे जो हमारे टंग है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट होते हैं, और 6 टेस्ट होते हैं हमारे फूड के. There are 6 different tastes of the food. Now which different tastes of food are there? जो हर जो टेस्ट होता है उसके साथ हर टेस्ट के साथ उसका अरोमा भी डिफरेंट होता है. जैसे स्वीट है, सॉल्टी है, पंचेंट है, सार है, बिटर है, एस्ट्रिंजेंट है. दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट वी हैव इन आवर फूड. The food has 6 main tastes: sweet, salty, sour means khatta, pungent, astringent and bitter. For good health, all the tastes should be taken in the proper quantity. So the 6 different type of food tastes जो develop किए गए हैं वो इसीलिए किए गए हैं to maintain a balance in the food that we eat. क्योंकि अगर खाली स्वीट खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर क्या रहेगा, एकदम मीठा 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 ही रहेगा, जो हमारे हेल्थ के लिए अगेन इट्स विच इज़ नॉट गुड. सो इफ़ यू ईट स्वीट देन यू शुड टेक अ लिटिल बिट of bitter things also to balance your sweet taste, or to balance the sweet that has gone into your sugar that has gone into your body. तो जितने भी टेस्ट हैं वो एक दूसरे को बैलेंस, इस तरीके से हम खाना बनाते हैं. हमारे खाने के अंदर जो फूड है, हमारा क्यूजीन है, वो इस तरीके से बैलेंस ही होता है. अगर स्वीट है तो उसके साथ थोड़ा बिटर होगा या थोड़ा सार होगा, कोई खट्टी चीज़ होगी, कोई मीठी चीज़ होगी, सब ऐसे मिक्स करके वो सारा अरेंज किया जाता है, जिससे कि कोई भी चीज़ जो भी है, चाहे स्वीट टेस्ट हो या सार टेस्ट हो या पंचेंट हो, वो एक्सेस ना हो जाए. द क्वांटिटी रिमेन्स इन द राइट प्रपोर्शन. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम विच फूड वी अक्वायर द फॉलोइंग टेस्ट. ये जो टेस्ट हैं हमको कौन कौन से फूड में से हमको ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट मिलते हैं. जैसे कि स्वीट टेस्ट है वो शुगर केन में से, जैगरी मतलब गुड़ में से, या शुगर क्यूब्स या शुगर में से मिलता है. ये हम रॉ भी खा सकते हैं और इनको किसी और के अंदर भी डाल के खा सकते हैं, क्योंकि हमको ये लिखा हुआ है टेस्ट हमको दिए हुए हैं. फ्रॉम वेयर डू वी गेट दोज टेस्ट, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से हमको वो टेस्ट मिल सकते हैं, एंड हाउ इट इज़ प्रेजेंट इन योर फूड. कैन यू ईट इट रॉ, इट इज़ boiled, it is roasted, fried or in any other form. तो शुगर you can use in any other form. उसको raw भी as it is also you can use it, and you can mix it in different things and also use it. Then salty taste we get from the salt only, which is again raw, and no other method of is present in the other form. It is present in the food. Salty means नमक वाला. सार जो होता है which is the खट्टा taste, we get it from tomato, आंवला, tamarind etc. तो आंवला जो होता है, अभी ठंडियाँ हैं तो आंवले बहुत अच्छे आ रहे हैं, टोमेटोज़ भी बहुत अच्छे आते हैं, टैमरिंड मीन्स इमली, ये सारे जो है हमको खट्टा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. इसको भी हम रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं. देन पंजेंट टेस्ट इससे जैसे गार्लिक का टेस्ट होता है, या क्लोव्स का होता है, जिंजर का होता है, मतलब अदरक है, लौंग है, मस्टर्ड सीड्स, राई के दाने हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनके अंदर जो होता है पंजेंट टेस्ट, थोड़ा सा तीखा टाइप का टेस्ट होता है. वो कैसे हम रॉ भी यूज़ कर सकते हैं, उसको रोस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, फ्राइड में भी यूज़ कर सकते हैं, और अदर फॉर्म में नहीं आता. मतलब 3 वेज में यू कैन यूज़ इट, रॉ, रोस्टेड एंड फ्राइड में. क्योंकि हम जो होता है फ्राइड में, जैसे हम कोई सब्ज़ी छौंकते हैं या कुछ करते हैं तो उसके अंदर कभी हम गार्लिक ऐड करते हैं, मस्टर्ड सीड्स ऐड करते हैं, क्लोव्स भी ऐड करते हैं. तो इस तरीके से हम उनको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं. देन इस जो एस्ट्रिंजेंट फॉर्म, जैसे कि हल्दी का टेस्ट होता है, बीटल नट मतलब पान का होता है, या मैंगो सीड्स जो होते हैं उनका होता है. तो उसको हम आइदर वी कैन यूज़ इट एज बॉइल्ड, रोस्टेड और रॉ, तीनों फॉर्म में हम उसको खा सकते हैं. देन इज योर बिटर टेस्ट मतलब कड़वा, जैसे नीम के पत्ते होते हैं, मेथी के पत्ते होते हैं, फेनुग्रीक मीन्स मेथी, बिटर गोर्ड इज करेला, विच कैन बी यूज्ड एज बॉइल्ड, रोस्टेड. इन बोथ द वेज यू कैन, इन दिस फॉर्म वी कैन ईट इट इन आवर फूड.
Now we move on to page number 67. Now we'll study about the different types of spices that we have in our kitchen. अभी हमने यहाँ पर देखा कि हमारे टेस्ट बड्स कैसे होते हैं और वो टेस्ट जो होता है हमको किन किन चीज़ों से कौन कौन सी स्पाइसेस ऐसी होती है या what things that are present in the kitchen that gives these types of different tastes in our food. Many spices are used to prepare food in the kitchen. Salt, chili, turmeric, cumin, fenugreek, mustard, jaggery, tamarind, etc. are among these spices. Such components are very important for our health. There is some scientific approach related to each of these components of the kitchen. This information is very important to us. Let's identify the spices based on its taste. Now here you know that different type of taste that are present we get from the spices that are present in our kitchen, जैसे कि नमक है, चिली मतलब लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, क्यूमिन मतलब जीरा है, देन फेन्यूग्रीक इस मेथी के सीड्स है, मस्टर्ड के राई के दाने हैं, गुड़ है, इमली है, ये सारे अलग अलग स्पाइसेस हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हर कंपोनेंट का अपना इंपॉर्टेंस है हमारे हेल्थ के लिए. थोड़े थोड़े फॉर्म में उनको हर किसी को अपने फूड के अंदर वी शुड हैव एन इनटेक ऑफ सच कंपोनेंट्स इन आवर फूड. दिस अ साइंटिफिक रीजन फॉर हैविंग दीज थिंग्स इन आवर फूड. जो भी components that we use in the kitchen have a scientific reason. That is why we add this in our food. Our Indian cuisine especially is based very much on the Ayurvedic concept because जितना भी हमारे जो मसाले होते हैं, सबसे ज़्यादा मसाले हम इंडिया में ही यूज़ करते हैं. तो जितने भी मसाले हम यूज़ करते हैं हर किसी का एक ना एक अपना जो है एक मेडिसिनल वैल्यू है. जो भी हम किचन के अंदर चाहे हल्दी हो या क्यूमिन हो, अजवाइन हो, एवरीथिंग हैज़ इट्स a medicinal value. When we add it in the food, it is directly going to help to benefit our health. Now let's identify the spice on the basis of the taste. 6 tastes don't include my name, yet no taste without me is the tall claim. Now, dear children, we will study about the 6 different tastes that we eat in our food or we get in our food. So, let's identify the spices based on it. 6 tastes don't include my name, yet no taste without me is my tall claim. Here we are talking about the sweet taste, मीठे taste के बारे में बात कर रहे हैं. Jaggery, sugar, sugar cubes, sugar cane, and naturally ripened fruits are sweet things. We get energy from sweetness. Now, what is the importance of eating the sweet things in the food is we get the energy from it to do the work. And secondly, we get these things from the naturally ripened fruits, मतलब कि जो पेड़ पे पके हुए मीठे फल होते हैं उनमें से हमको मिलती है. Then jaggery में से sugar cane, from all these things we get the sweet taste and the sweetness of the things we get it from these things. Next is the I am Mr. Salt, briny taste is my fame, king of every kitchen, famous by this name. Now here we are talking about the salty taste, which is also called as a namkeen taste. Salty taste is mainly provided by the salt. It is the salt or the namak that provides you that salty taste. Do you know this? The food is tasteless without it. During fever, the cloth is soaked in the salty water and is kept on the forehead to reduce the fever. Now, without the salt, any of the salty things are tasteless, as in the dal or vegetables, or sometimes some people a little bit of salt, they put it in the rice also while we make the puris or parathas or teplas, everything. In all that we add the salt. If salt is not there, it is totally tasteless. And one more use of salt is the medicinal purpose of it. It is used to reduce the fever. If you have a very high fever, in the water you mix a little bit of salt and then soak a cloth and put that soaked cloth in the salty water and put it on your forehead continuously for some time, then it will definitely reduce the fever. A thought of mine sizzles your tongue and look how about waters. Sweet and sour is my tasty, yummy juice one loves and splurs. Now here we are talking about the sour taste. A thought of me sizzles your tongue. मतलब कि
तेज़पात से हमारे जीभ में कैसा टिंगलिंग इफेक्ट आता है, वो नाम सुनने से ही ऐसा हो जाता है। स्वीट एंड सावर इज माई टेस्टी यम्मी जूस वन लव्स टू स्प्लस, मतलब कि जो खट्टा, एकदम खट्टा मीठा टाइप का जो होता है, वो टेस्ट हमको किस में से मिलता है? सार जूस इज ऑब्टेन फ्रॉम लेमन, टमाटो, टेमरिंड, कोकम, आंवला, रॉ मैंगो एक्सेट्रा। एंड फ्रॉम दे वेयर वी गेट दिस सार टेस्ट, वी गेट इट फ्रॉम द रॉ मैंगो, मतलब कच्चे आम, जो हरे आम होते हैं उसमें से, लेमन में से, ऑरेंज में से, टमेटो में से, tamarind इमली में से। कोकम is also a type of a type of herb that is used in making of preparation of dal, and also it is used for making the sharbat. Then amla is also there. So from all these we get the sour taste, khatta taste milta hai. Sour taste helps in the digestion of food. You must have drunk buttermilk after having meals. Buttermilk is beneficial for the digestion of food. अब बहुत बार ऐसा ये खट्टा खाने का क्या इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स टू द फूड टू डाइजेस्ट। हम लोग नॉर्मली यहाँ गुजरात में तो इट्स क्वाइट अ ट्रेंड दैट आफ्टर यू ईट योर फूड यू ड्रिंक बटर मिल्क। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ ड्रिंकिंग दैट बटर मिल्क आफ्टर ईटिंग द फूड? इज सिंपली दैट इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। बटर मिल्क जो होता है थोड़ा सा खट्टा टेस्ट का होता है, और उसके अंदर जिसको हम छाछ बोलते हैं गुजराती और हिंदी में, तो उससे जो है हमारे फूड के डाइजेशन में वो हमको हेल्प करता है, इसलिए हम उसके बाद लेते हैं। तो सार टेस्ट इज यूज्ड इन इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। Green and red are my colors. I know as a chili. Keeping your tongue stinging, spicy, tangy is my ability. Now here we are talking about the pungent taste of the chili. मिर्ची का कैसा टेस्ट होता है वैसा टेस्ट आता है। ग्रीन और रेड इज माई कलर। मिर्ची कैसे रंग की होती है? कच्ची होती है, हरे रंग की होती है। अदरवाइज व्हेन इट ड्राइज अप इट बिकम्स रेड। सो रेड चिली एंड ग्रीन आर द कलर्स ऑफ द चिली। एंड उसका नाम सुनते ही आपके मुंह में क्या होता है? एकदम टिंगलिंग सा जो होता है, टैंगी सा टेस्ट जो है आपके मुंह के अंदर आने लगता है। सो here we are talking about the pungent taste. Spicy taste is obtained from chili, mustard, black pepper, ginger, ajwain, garlic, cinnamon, clove, white pepper, etc. From where do we get the spicy taste? We get it from the chili. मिर्च में से तो मिलता ही, of course you all know that. Then mustard में से मिलता है, those mustard seeds are there. Then black pepper, काली मिर्च, ginger मतलब अदरक, अजवाइन, garlic यानी कि लहसुन, cinnamon यानी कि cinnamon I don't know what we call in Gujarati, but clove means long. White pepper जो होती है वो सफ़ेद मिर्ची होती है। clove के जैसे ब्लैक पेपर के जैसे वाइट पेपर्स, वाइट दाने आते हैं, वो भी बहुत ही स्पाइसी होती है। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस में से हमको मिलता है स्पाइसी टेस्ट। और जो स्पाइसी टेस्ट होता है, स्पाइसी स्पाइस किल्स हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स एंड सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस। नाउ दीज स्पाइसेस दैट वी पुट इन आवर फूड, so it helps to secrete the digestive juices and which helps in the digestion of the food. And there are certain harmful bacteria or organisms that are present in our body. So the spices kills those bacteria also and keep our body healthy. But too much of spicy food is also not good for health, because बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएंगे तो क्या होगा? जो बैड ऑर्गेनिजम्स और बॉडी में प्रेजेंट है वो तो मर जाएंगे, साथ में गुड वंस विल ऑल्सो डाई आउट। सो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। No one loves me as I taste plum and crest. Help rid of cough and bad tasting mucus. I am the best. So we are talking about the astringent taste, which is the taste of a turmeric. Turmeric का जो taste होता है, turmeric, pulses, mango seeds, betel nut, etc. have a astringent taste. Betel nut यानी कि what do we call, सोपारी। जो सोपारी होती है उसको हम बीटल नट बोलते हैं। फिर टर्मरिक मतलब हल्दी, दाल है, मैंगो के जो सीड्स, कच्चे आम के जो सीड्स होते हैं वो हैं, वो सारा उनका टेस्ट कैसा होता है? दैट इज़ एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट। लेकिन एस्ट्रिंजेंट टेस्ट जो होता है वो हमको किसके लिए काम आता है? इट ऑल्सो हैज़ अ मेडिसिनल वैल्यू। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट रिमूव स्टिकी सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। जो हमारे मुंह के अंदर कुछ ऐसे स्टिकी सब्सटेंस, कभी हमको सर्दी हो जाती है तो कफ होता है, या जो हम कफ जो हमारे मुंह के अंदर आता है या गले के अंदर स्टिक होता है, वो सब जो जिससे हमारा गला और मुंह काफ़ी स्टिकी हो जाता है, तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है और हमारा माउथ जो है एकदम फ्रेश फील होता है अगर हम उसको खाते हैं। मैंगो सीड्स एंड बीटल नट आर यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर्स एंड रिमूव्स द स्टिकीनेस फ्रॉम आवर माउथ। अगर हमारे मुंह पे जो है टेस्ट, समटाइम्स हमारे मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है या स्वाद नहीं रहता है या फील द टेस्टलेस हो गया है हमारे मुंह के अंदर, तो अगर हम मैंगो सीड्स है या बीटल नट है, मतलब
सो पारिया ये खाएंगे तो उससे जो है हमारा टेस्ट रिवाइव भी हो जाएगा और हमारे मुंह के अंदर जो ब्लैंकनेस आ गया है या जो स्टिकीनेस आया है वो सब भी रिमूव हो जाएगा. नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 68. People just spit me out, but when they say gulp and gobble, you know my virtues for healthy life, bitter taste is noble. Now here we are talking about the bitter or the karwa taste that we have. We get that bitter taste from bitter gourd, fenugreek, that is your methi, or neem, which is very bitter in taste but which is very healthy. The bitter juice activates our hunger. It helps us to keep our body disease free. Bitter taste is the only taste which helps to keep our body free from diseases. और जो हंगर होता है, अगर हमको भूख कम लगती है या नहीं लगती है तो उसको जो है हमारे हंगर को एक्टिवेट करने के लिए, इन अदर वर्ड्स योर डाइजेशन प्रोसेस विल बिकम गुड, सो यू विल फील हंग्री. तो इससे क्या होगा, आपकी जो जो भूख लगने का जो प्रोसेस है अगर वो थोड़ा कम हो गया है या स्लो हो गया है, माइल्ड हो गया है, तो भी उसको एक्टिवेट करता है बिटर टेस्ट. और ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्दी जो है आपको बिटर टेस्ट ही रखता है. इसलिए जो अभी सीज़न है तो प्लीज़ ईट द मेथी जो आती है बहुत कड़वी और अच्छी होती है हेल्थ के लिए, तो इस वक्त उसका मैक्सिमम यूज़ करिए इन योर फूड टू रिमेन हेल्दी. नाउ नेक्स्ट इज़ योर right. Next is your right. We have acquired introduction to some of the kitchen spices. Introduce any one component or spice of the kitchen to your friend. Identify the things brought by your other friends. Now here some components of kitchen that we use are given. You have to identify the color, taste, use, and does it have any smell or aroma or not, that you have to write. First is the turmeric or the haldi, which is yellow in color. Its taste is astringent. It is used in cooking and it is applied on the injured part of the body, making the paste with the salt, and it is applied with the salt and without salt also. Directly the paste is applied. It has a smell. Then chili, which is red in color, it is pungent in taste. It is used in the kitchen and in making the pickles, achar banane ke liye. There's no smell in that. Salt, which is white in color, it is salty in taste. It is used in kitchen in making food, to clean the teeth, दांत साफ करने के लिए. और कोई भी बॉडी का पार्ट होता है जहाँ पर स्वेलिंग या सूजन आ गई हो, वहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है इसका पेस्ट. इट डज नॉट हैव एनी स्मेल. Garlic, which is white in color, it has a pungent taste again, and it is used in kitchen. In the cooking only we use it, and it is also used for making the garlic sauce. It has a very strong flavor. Jaggery, which is gourd, which is light yellow in color, it is sweet in taste. It is used in the kitchen in the cooking, and then it is used in the pickles, achar banane ke liye, and it is used on any auspicious occasion. कोई भी अच्छा त्यौहार होता है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कोई भी अच्छे फंक्शन में हमेशा गुड़ का यूज़ किया जाता है. It doesn't have any smell. Then lemon, which is green or yellow in color. If it is raw, it is green in color. If it is ripe, it is yellow in color. It is sour in taste. It is used in the kitchen. It is used to make drinks. In the stomach pain, in सब में जो है ये यूज़ किया जाता है. और it has a smell, खट्टी smell आती है lemon में से. Page number 69. Is it true? The ingredients used in the kitchen provide taste, flavor, and aroma to our food. They are known as appetite and health stimulant. Now, what is the meaning of appetite and health stimulant? Is to all the spices that are used in the kitchen to provide the flavor, टेस्ट एंड अरोमा. मतलब जो स्वाद और सुगंध जो हमको जो स्पाइसेस से हमारे खाने के अंदर मिलता है, वो हमारे खाने को तो अच्छा बनाता ही है, एनहांस करता ही है हमारे खाने के टेस्ट को, बट इट ऑल्सो इज़ कॉल्ड एज द एपेटाइट और द हेल्थ स्टिमुलेंट. मतलब कि हमारे एपेटाइट को, मतलब हमारे जो भूख को बढ़ाने वाला जो है, और हमारे हेल्थ को एकदम जो परफेक्ट रखने के लिए, जो हेल्दी रखने के लिए ये काम आता है. Now next is your read. Given is the list of the ingredients used in the kitchen. Circle the products that you know and get the information of unknown ones and fill the empty boxes. Now here some empty boxes are there in which I have written the spices. Now here the ones which you have seen, you have to make a circle. Like jaggery है, sugar cubes है, sugar है, salt है, ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई. Then coriander, which is the सूखा धनिया, chili. Then tamarind. This is your hara dhania you have seen. Then tamarind, kokum, ginger, then turmeric, ये आपने सब देखा है. ब्लैक पेपर, काली मिर्च, अजवाइन. देन सिनेमन आपने देखा ही होगा, लंबी लंबी स्टिक्स आती है, दालचीनी जिसको बोलते हैं. क्लोव, कार्डमम, देन हींग इट इज. देन ड्राई जिंजर पाउडर, क्यूमिन, करी लीव्स, गार्लिक,
मस्टर्ड एंड लेमन। ये सारी चीज़ें जो है आपने देखी हुई है। अब जो नई चीज़ें देखी हुई जैसे कि फेन्यूग्रीक, जो मेथी के दाने होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। सेसमी, दिस इज़ योर तिल, दीज आर योर बीन्स, देन दिस इज़ योर ड्राई कोरिएंडर, सूखे धनिया के जो दाने होते हैं वो, ग्राम फ्लोर चने का आटा है, लिंडी पीपर इज़ अ टाइप ऑफ एक टाइप का आयुर्वेदिक हर्ब होता है, देन मेंथा। ये सारी चीज़ें जो है जो आपने शायद नहीं देखी होंगी। नाउ विच टेस्ट आर लाइक बाय यू, आपको सबसे तक कौन सा टेस्ट पसंद है? स्वीट, सार एंड पंजेंट, मतलब मीठा, खट्टा और तीखा स्वाद। विच डिशेज डू यू योर टेस्ट डू यू विच डिशेज ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट? डेजर्ट, यानी कि आइसक्रीम्स हैं, देन केक्स है, फ्राइड फूड एंड लेमन ड्रिंक, ये सारी चीज़ें पसंद हैं। नाउ इज इट ट्रू? Excess of taste and aroma is good in food is harmful for health. Due to this, there's a rapid increase in the patients of heart attacks and diabetes. According to the season of our country, proper use of taste and spices should be done. Now, our Indian food is such that it is according to the season only, but we don't follow that. That is why we fall ill and we eat too much of spicy food, जो होता है aromatic food हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे हेल्थ को नुकसान होता है, which increases because too much of fried और spicy fried food खाने से हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारा हार्ट का फंक्शनिंग जो होता है वो कम हो जाता है। और अदरवाइज in other words we can say that fried food damages our heart, and it also, with too much of eating too much of sweet food also increases the sugar level in our body, and which gives birth to a disease which is called as diabetes, in which the insulin which regulates the sugar in our body stops working, and we have to take the insulin that should be developed in our body stops developing, and we have to take from outside to balance the high sugar level in our body. So we should not eat too much of sweet food and too much of oily food. So according to the season we should eat the food and take all the seasonal fruits and vegetables to keep our body healthy, and see that we don't eat too much of fried or sweet food. And if we eat, then we should do the proper exercises to burn the calories that we have taken, the extra calories that we take in our food. Now last, if we move on to page number 70, right, ask your elders about the components of the kitchen or the spices used as a primary cure for the disease. Now there are certain disease in which we use these type of spices or the herbs to cure it. Now sneezing or cold, that means सर्दी जुकाम होता है, उसमें क्या, add turmeric and dry powder of ginger in hot milk and drink, gargle with salty water. जैसे हल्दी वाला दूध जिसको हम बोलते हैं वो है, और ड्राई जिंजर पाउडर डाल के अगर, और हल्दी डाल के अगर दूध को गरम दूध पिए तो उससे हमारी सर्दी ठीक हो जाती है। और अगर सॉल्टी वाटर से गार्गल करें तो हमारा गला जो होता है ख़राब होता है सर्दी में, तो वो ठीक हो जाता है। जैसे लेग स्प्रेन का स्वेलिंग है, अगर पैर में मोच आई है तो मेक अ पेस्ट ऑफ टर्मरिक एंड सॉल्ट एंड अप्लाई इट ऑन द अफेक्टेड एरिया, अप्लाई हॉट वाटर जैकेट ऑल्सो। टर्मरिक और सॉल्ट का अगर हम एक पेस्ट बना के, और वो जो जहाँ पर भी मोच आई है, स्प्रेन में का जो भी एरिया मोच आई है वहाँ पर अप्लाई करें, और उसके ऊपर हॉट वाटर से अगर हम जो जैकेट यूज़ करें या हॉट वाटर से सिकाई करें तो जल्दी उसकी असर होगी। नेक्स्ट इज योर स्टमक पेन एंड गैस, समटाइम्स वी ईट टू मच ऑफ फूड या ओवर ईटिंग हो जाता है, या कुछ डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हमको स्टमक में पेन होता है, या हमारे बॉडी के अंदर जो वो डाइजेस्ट नहीं होता एंड इट डेवलप्स गैस इन आवर बॉडी, तो उसके लिए हमको ड्रिंक सोडा एंड लेमन जूस, सोडा के अंदर लेमन जूस ऐड करके पीजिए तो उससे ठीक हो जाएगा। या टेक सम कैरम सीड्स, अजवाइन के दाने हैं वो खा सकते हैं, विथ सॉल्ट एंड वार्म वाटर, नमक के साथ उसको गर्म पानी के अंदर खाइए तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। इनडाइजेशन हुआ है तो भी जो कैरम सीड्स है, अजवाइन के दाने हैं विथ हॉट वाटर, देन हींग विच इज़ सोक्ड इन वाटर एंड अप्लाई ऑन द इफेक्टेड एरिया, उसको अगर हम स्टमक के ऊपर अप्लाई करेंगे हींग को तो भी उससे आराम मिलेगा। देन व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स, कभी कभी जो ब्लड प्रेशर होता है आइदर इट बिकम्स हाई और इट बिकम्स टू लो, देन ड्रिंक सिरप मेड ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड लेमन जूस। इन सिंपल वर्ड्स, जो हम नींबू का बनाते हैं, अगर वो आप पिएंगे तो तुरंत ही जो आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है इट विल स्टार्ट रेसिंग। तो नेक्स्ट इज थिंक एंड से, which spices in kitchen are used to cure the disease? Turmeric, cold and sneezing; salt, swelling of leg or hand sprain; then carom seeds for stomach pain, that means अजवाइन के दाने पेट के दर्द के लिए। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमने 3 points are given, so we have written 3 things. Based on this we can now
we can know about the acid, base, and salts. We will learn about this in detail in the higher standard. So from this we can tell that the spices and the taste that we have developed in, जो टेस्ट बड्स हमारे टंग में जो डेवलप हैं उसमें एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट सब टेस्ट उसके अंदर आ जाते हैं. द फूड जो हम खाते हैं उसके अंदर भी एसिड, बेसिस और सॉल्ट सब प्रेजेंट होते हैं, जो हम डिटेल में विल रीड इन द नेक्स्ट स्टडी क्लास. Definitely there is effect of food on our health, but the food is also affected by the thoughts in the mind of one who is preparing or serving it. So prepare and eat the food with calm mind and good thought. Now this is a very very important thing, that the food that we eat is definitely has a impact on our health. If we eat healthy food, we will become healthy. If we don't eat healthy food, then we will have a lot of problem in our body. But one more thing which is very important and which affects the food is the thought of the mind. While you are preparing the food, while you are cooking the food, what type of thought process is going in your mind? If you are making the food, if you are preparing the food, if in a happy mood, then those type of emotions and feelings come into your mind. And if you are preparing in some sad mood or some problem is going on in your mind, then that feelings will come in your food. So when you are preparing the food and when you are eating the food, always prepare the food in your good thoughts in your mind and calmly. कभी भी गुस्से में या ऐसे कुछ सोचते हुए खाना नहीं बनाए. हमेशा अच्छे मूड में और अच्छा विचार करते हुए खाना बनाएंगे तो वो अच्छा खाना जो है आपके हेल्थ को और बेहतर करेगा. Now dear children, with this we come to the end of lesson number 8. The same thing is there in the workbook, so I'm not going to explain the workbook part. I'm just sent the PDF of it. You will do it from that. So dear children, bye bye till we meet on the next turn, and have a nice day, and please complete the work in the textbook as well as in the workbook.